30 अप्रैल को सुबह 8:45 बजे ऋषि कपूर के निधन के बाद सबसे पहले अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर फैंस को उनके जाने की जानकारी दी थी। हालांकि थोड़ी देर बाद उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया था, लेकिन फिर शाम को उन्होंने फिर से एक ब्लॉग लिखा। इसमें ऋषि को पहली बार देखने से लेकर दोनों के बीच के संबंधों को कलम से उकेरने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने लिखा, मैंने पहली बार ऋषि कपूर को उनके घर देवनार कॉटेज चेंबूर में देखा था, जब मुझे राज कपूर जी ने घर पर एक शाम आमंत्रित किया था। वह एक बेहद ही ऊर्जावान चुलबुले थे। उनकी आंखों में एक अलग ही शरारत थी। उस वक्त वो अपनी फिल्म बॉबी के लिए तैयारी कर रहे थे। इसके बाद हमने उन्हें कई बार स्टूडियो में देखा। वो बेहद उत्साही और मेहनती नौजवान थे, जो हर तरह से सीखने के लिए तैयार रहते थे। वो बहुत बेखौफ चलते थे। कई बार तो उनका अंदाज एकदम महान पृथ्वीराज कपूर से मिलता था। हमने कई फिल्मों में साथ काम किया। विश्वास मानिए, जब वो कुछ कहते थे, आपके पास उनकी बातों का कोई विकल्प नहीं होता था। वो सेट पर अक्सर हम सभी को हंसाते रहते थे। केवल सेट पर ही नहीं, वो हर उस जगह जहाँ मौजूद होते थे, वहाँ का माहौल ही खुशनुमा बना रहता था। मैं उन्हें अस्पताल में कभी मिलने नहीं गया था। मैं उनके मुस्कुराते हुए करुण चेहरे पर संकट नहीं देखना चाहता था, लेकिन मैं निश्चित हूँ, जब वो गया था, वो एक सौम्य मुस्कान के साथ चला गया होगा। In memoriam, had seen him at his home, Deonar Cottage, Chembur, a young, energetic, bubbly, mischievous eyes, Chintu on those rare moments when I was privileged to have been invited to an evening at Rajji's house. I would see him more often after, at RK Studios, when he trained as an actor for his film to be made, Bobby. A diligent, enthusiastic youngster, ready to pounce onto every learning that came his way. In that famous, large and legendary makeup room of Rajji, at the end of the first floor corridor of makeup rooms, he had a walk that was confident and determined, a stride and style that was similar to that of his grandfather, the legendary Prithviraj Ji. A walk I had noticed in one of his earlier films. That walk, I never found it in any other. We worked in several films together. When he spoke his line, you believed every word of it. There was never an alternative. Its geniusness was beyond question, and there has never been any other that could lip-sync a song as perfectly as he did. Never. His playful attitude on set was infectious. Even in the most grave sequences, he would discover that comedic spark, and we would all just crack up. Not just on set. If you were with him at any formal event, he would find that little distractive, light-hearted gem to expand on and lighten the situation. When there was a time lapse as the shot got readied, he would bring out his playing cards, or at times pull out his rather complicated bagatelle board and invite others to play. A competition, not just for fun, a serious competition. During his time of diagnosis and his treatment, he never ever lamented his condition. It was always, see you soon, just a routine visit to the hospital, I'll be back shortly. Gio de Viver, the exuberant enjoyment of life, was a gene he inherited from his father. The legend, the ultimate showman, the iconic Raj Kapoor. I never visited him in hospital. I never wanted to see distress on his smiling, cherubic face. But I'm certain, when he went, he must have gone with a gentle smile. बिल्कुल जैसे बिग बी ने कहा, आखिरी पलों में ऋषि कपूर के चेहरे पर मुस्कान थी और वही जिंदा दिली थी।